शुभारंभ बैच में आपका स्वागत है. You're watching me on the Study with Sudhir app. My name is T.S. Sudhir. A lot many of you have been asking me, and in fact this I would call it the FAQ. How to make a timetable, how to structure our day. And I also see a lot many people making timetable almost every second day. I have always had an aversion to make a timetable, mainly because I believe there is no one size fits all. What works for Madhu will not work for Kishore. What works for Nandita will not work for Nilima. That's something very important and you need to realize that. Okay. Second point is that most students, very few students are in fact able to implement the timetable that is made for them. You may follow it for 1 day, 2 days, maybe a week, maybe 10 days if you're really disciplined. But उसके बाद थोड़ा सा ये हो जाता है, then you want a new timetable, right? Is this way the right way to go about things? No, I think not. So in this video, I'm going to tell you how to make a timetable, how to structure your day yourself so that you don't need to go to different YouTube channels and get gyan, okay, which will be a very generic gyan and not tailor-made for you. Okay, so this is a DIY video, which means do it yourself video. Okay, जैसे IKEA का फर्नीचर का होता है ना, the DIY videos. This is a 5-step process. The first step is to do a KYC. अब KYC क्या है? KYC does not mean know your customer. KYC means know your character. और character का मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम्हारा character कैसा है. Character का मतलब है कि तुम अपने आप को समझो. Know yourself very well. Okay, और इससे मतलब है कि whether you are an early riser or whether you like to study in the night. क्या आपको ज़्यादा नींद आती है or are you the type who likes to take a shower and only then sit and study? Each one of us are different, right? Each one of us is very different. What works for my best friend or what works for my brother may not work for me, right? So you need to understand very well. Can you study for longer sessions or do you need only half-an-hour sessions, or can you study for 2.5 hours at a stretch? You need to know yourself and only you will know, which is why I say this generic timetables के पीछे मत भागिए, वो workout नहीं होंगे आपके लिए. You need to make your own timetable, which is why जब भी मैंने timetable videos बनाए हैं मैं हमेशा बोलता हूँ tweak करो अपने मुताबिक. You know, you do it according to what it works for you. But the best is if you can make a timetable yourself for yourself. Okay, you need to know how determined you are to reach your goal. Step number 2 is to divide your day into 5 zones. 5 zones में अपने दिन को divide कीजिए. पहला zone study zone, दूसरा zone sleep zone, तीसरा zone school hour zone, fourth zone relaxation zone, पांचवा activity zone. 5 जोन्स में अपने दिन को 24 घंटों को डिवाइड कीजिए. नाउ अलॉट स्पेसिफिक आवर्स और टाइम पीरियड फॉर ईच ऑफ द 5 जोन्स. ओके, नाउ रिमेंबर वन थिंग, जब आप ये कर रहे हैं, व्हेन यू आर डूइंग दिस टाइम अलॉटमेंट, यू आर मेकिंग ए प्रॉमिस टू योरसेल्फ. यू आर प्रॉमिसिंग योरसेल्फ कि मैं इस शेड्यूल को स्टिक करूंगा. अगर आप कुछ लिखेंगे और करेंगे बिल्कुल उल्टा, तब आप हीरो नहीं बन सकते, जीरो ही बनेंगे. इस बात का ध्यान रखिए. तो अगर आपको हीरो बनना है तो ये शेड्यूल जो आप खुद अपने लिए बना रहे हैं उसको स्टिक करना होगा. ओके, दैट इज समथिंग, दैट्स अ प्रॉमिस यू आर मेकिंग टू योरसेल्फ. ओके, एंड देयर इज रियली नो पॉइंट डूइंग दिस एक्सरसाइज इफ यू आर नॉट एबल टू कीप योर प्रॉमिस. A schedule is a timetable, it is meant to be followed. Step number 3, now you allot hours to each one of these zones. Sleep time comes most important. Sleep time should not be less than 7 hours. 7 hours minimum. आपकी एज ग्रुप के लिए 7 घंटा बिल्कुल जरूरी है, उसमें बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए. 7 घंटा जरूरी सोना है, लेकिन 8 घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए. सो इट कैन बी बिटवीन 7 and 8 hours डिपेंडिंग, अगेन एज आई सेड, ऑन स्टेप नंबर 1 KYC. इस तरह का साइंटिफिक डे स्ट्रक्चरिंग आपको कोई नहीं बताएगा. लोग बता देंगे, लेकिन एज आई सेड, व्हाट वर्क्स फॉर ए विल नॉट वर्क फॉर बी. ओके, सो 7 घंटे से कम नहीं, 8 घंटे से ज्यादा नहीं. सो रफली 1/3 of your 24-hour day cycle. Your activity zone will include your shower time, your breakfast, your lunch, your snacks, your dinner time, and ideally it should not be more than 2 hours, everything included. ये सब मिला के 2 घंटे से ज्यादा का टाइम नहीं होना चाहिए. Your relaxation time can be 2 hours.
चूंकि अभी एग्जाम बिल्कुल पास नहीं है, एंड आई एम नॉट इंक्लूडिंग द जेई एंड नीट वाले स्टूडेंट्स हियर, आई एम टॉकिंग अबाउट द रेगुलर 2022 बोर्ड्स एंड फाइनल एग्जाम्स स्टूडेंट्स, you can have relaxation time of up to 2 hours, and that can include some TV, some phone chat, some games, some walking, jogging, exercise, meditation, whatever. And this is very important because हम सब अभी काफी हद तक घर के अंदर हैं. These are depressing times, so you need to give time to exercise for some physical exertion, everything. Okay, so you need to relax as well. So this relaxation activity time of 2 hours is important. Okay, relaxation time. If your online classes start, which I believe has started in many schools, you need to factor in that school hours of at least 7 hours. इतना तो हो ही जाता होगा, right? 6 से 7 घंटा हो जाएगा, तो आप 7 घंटा उसको अलॉट करके चलिए. इसका मतलब आपके पास बचते हैं तकरीबन 5 घंटे, approximately 5 hours, depending on how many hours you have allotted to each one of those other 4 zones. Now, in this you need to fit in your regular homework and self-study time. I am assuming that out of those 5 hours, you are able to devote about 2 hours to your homework, or maybe 2.5 to 3 hours. Then accordingly, your study time will be between 2 to 3 hours. Okay. Now, those of you who are preparing for competitive examinations in class 12, they will have the entire 7 hours of school time plus these 5 to 6 hours, so that you have about approximately 12 odd hours to deal with, which is a good time. Okay, तो उसके अकॉर्डिंगली आप अपना टाइम गुजार लीजिए. जो स्कूल अटेंड करना हो उनको ये 7 + 5 का टाइम है. स्टेप नंबर 4, नाउ दैट यू हैव लुक्ड आफ्टर दिस 5 approximately 5 hours of your study time, तो आपने उस समय देख लिया कि आप कितना टाइम किस चीज को डिवोट करेंगे. सेल्फ स्टडी ऑफ एटलीस्ट 2 hours and maybe 3 hours if you are very lucky is absolutely must. एवरी डे अगर आप डिसिप्लिन के साथ पढ़ेंगे तो आपको इससे काफ़ी फ़ायदा होगा 9th, 10th, 11th क्लास और जो अभी 12th में भी गए हैं. सो दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. अब इसमें आपको ये सोचना होगा कि आप ये 3 घंटे सेल्फ स्टडी के 2.5-3 घंटे कहाँ अलॉट करेंगे. वेयर विल यू अलॉट दिस 2.5-3 hours, एंड दैट विल डिपेंड ऑन वेदर यू आर एन अर्ली मॉर्निंग पर्सन और अ late night person. Morning time generally retention is better than late night time. Okay, so you need to say 2 hours I will study in the morning time, 1 hour in the night self study, and accordingly you can allot subjects. Now we come to step number 5, allotment of subjects. Which subject to study when is again a very important decision. So night time you should generally devote to problem solving subjects like mathematics, like physics, like chemistry. You devote to those kind of subjects. Morning time you devote to subjects where you need to be able to retain stuff like biology, chapters like biology, subjects like biology, history, civics, geography. उस तरह के subjects you can devote in the morning time, right? If you have some kind of buffer time in the afternoon, suppose homework कम मिला हो, you can do any of the languages in the afternoon time or over the weekend, or you can alternate between history, civics one day, biology one day, English one day, right? That again depends entirely on your workload, on your subject load. So that's all you need to do. You need to not ask anyone कि मेरा टाइम टेबल बना दो, मेरा टाइम टेबल बना दो. इस तरह की पूछने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. अपना टाइम टेबल खुद बनाओ, because as I said, आपसे बेहतर आपको कोई और नहीं जानता. Last one tip. This year also will be a lot of online classes. So do not make the mistake of what you did last year or what your seniors did in this batch of 2021. Be regular so that you don't have to make a last minute scramble for notes, for chapters, understanding, etc. February, March 2022 में मत जागो. ये मत सोचो कि जब जागो तभी सवेरा. नो, कभी कभी सवेरा निकल जाता है, दोपहर शाम हो जाती है. समझे? सो शुरुआत अच्छी करो. इस तरह का टाइम टेबल बनाओ अपने हिसाब से. ये मत सोचो कि उसने ये बनाया मैं भी वही फॉलो करूंगा. बी ए लीडर, डू नॉट बी ए फॉलोअर. ओके, ऑल द बेस्ट टू यू. शुभारंभ इस तरह से करो. थैंक यू वेरी मच.